है, उसमें ज़्यादा कुछ ही नहीं है, बट हाँ अगर आप ढंग से नहीं समझेंगे तो मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं. सो जस्ट ट्राई टू डू इट केयरफुली एंड प्रैक्टिस इट. अभी पीपीटी ओपन कर रहा हूँ, देन विल स्टार्ट. So basically today what we are going to have, that is basically like how I don't know, net issue there, sometimes it's going out and ultimately. So up till last class we have finished. One was your introduction to digital logic and second was your basic structure of computers. Today we are going to discuss about basic operational concepts. Basic operational concepts. Okay. So I will share the screen. Can you confirm my screen is visible to all of you? It's loading, sir. Okay. Very slow. I don't know why. That's why it took around 5-6 minutes to just load it. Very slow. I don't know. Usual system, but what we can do, and we have to take the classes from college only. So otherwise, at home there is no issue. We have laptop and we can easily manage it. But here, very slow. Now it's okay. Loaded or not? Still. No, sir.
हाँ अब आ जाना चाहिए। अब बताओ आप, अभी प्रॉब्लम है क्या? आ गया? Yes, now it is visible. Okay, good. So this is the today's topic what we are going to discuss, basic operational concepts. अच्छा, ऑपरेशनल कंसेप्ट का मतलब क्या होता है? हम लोग क्या क्या कर सकते हैं सिस्टम में? नॉर्मली हमारा क्या पर्पस होता है? आइदर हम डेटा रीड करते हैं फ्रॉम द मेमोरी एंड उसको यूज करते हैं। सपोज हमारा कुछ प्रोसेस करना है, सो प्रोसेसर में आपका लोड करते हैं, बिकॉज एज यू नो दैट अनटिल अनलेस दैट सॉफ्टवेयर इज लोडेड इनटू द प्रोसेसर वी कैन नॉट एक्सिक्यूट दैट। तो पहला काम हमारा होता है कि उसको लोड होना है कहाँ पर? आपका प्रोसेसर में, एंड देन ओनली वी कैन एक्सिक्यूट इट। अब उसमें पहला तो हो गया लोड करना। लोड करने का मतलब क्या होगा कि हम लोग मेमोरी से रीड कर रहे हैं। दूसरा होता है कि हमने प्रोसेस कर लिया, नाउ वी हैव टू स्टोर द डेटा इन द मेमोरी। सो नेक्स्ट क्या हो गया आपका? स्टोर करना। ठीक है, सो मेजर ऑपरेशन हमारा क्या हो गया? लोड एंड स्टोर। या तो रीड करते हैं मेमोरी से या मेमोरी में स्टोर करते हैं, राइट? सिंस आई told you before also, if you are going to read something from the memory, you have to specify the location or address of the memory from which location you are going to read it, right? And then even if you are going to store it, you have to specify the location along with the data what you are going to store in that particular location, and other operations whatever is there, arithmetic operation and other things that is there. So I'll just go through the text one by one and I'll try to explain. And if you find anything, you can just. So, as I said, first it has to be loaded into the processor. So, see what is given there first to perform a given task, like addition, subtraction, loading, reading, whatever is there, right? An appropriate program consisting of list of instructions is stored in the memory. Until unless it is loaded into memory, you cannot execute it. The first task is it has to be loaded into the memory, that is stored in the processor whatever is loaded from the memory, and everything whatever is done that already you are knowing that it is done in the arithmetic logic unit. Now see what is given there. Individual instructions are brought from the memory into the processor, because it has to be loaded there, then only it will be processed, right, in your arithmetic logic unit, which executes the specified operation, right? Data to be used as instruction operands are also stored in the memory. Operands, all of you have already done programming, so you must be aware about what are the operands. Operands are nothing but the variables, which is variable or constants also you can say, whatever is stored in the memory, which can be utilized for the processing of your instruction or commands. Suppose there is a command given there, you can see here load, that is R2 LOC. Just try to understand this statement and then it will everything will, after that everything will be clear. Why? Because if you understand this load basically this is your assembly language, and in assembly language we use load, store, add, subtract, all these operations. We'll see in the coming this slides. So if you are writing load, it means what you are giving the instruction to the system. There is a location, LOC. The name of the location is LOC. From there, whatever data or instruction is there, right, you are going to load into register R2, right? So it will read the location LOC, and whatever instructions or command is there, that will be loaded into register R2. So see what is given there. Execution of this instruction requires several steps. अब इसमें क्या क्या स्टेप होगा? पहला तो आपको इंस्ट्रक्शन फेच करेगा, कहाँ से? LOC से। किस में? LOC
कहाँ पर है आपका, मेमोरी में है, एंड इट हैज टू बी लोडेड इनटू द प्रोसेसर। ठीक है, तो वही चीज कर रहा है कि एक्सक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्स सेवरल स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपका, द इंस्ट्रक्शन इज फेच्ड फ्रॉम द मेमोरी इनटू द प्रोसेसर। तो पहला तो टास्क हो गया आपका कि आपने लोड करने का मतलब यू आर रीडिंग फ्रॉम द मेमोरी, और आपने स्पेसिफाई कर दिया उसका एड्रेस भी, दैट इज एलओसी। तो पहला इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा वहां से। ठीक है, नेक्स्ट उसमें क्या होगा आपका, डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब कहते हैं कि व्हाट ऑपरेशन यू आर गोइंग टू परफॉर्म on that instruction। तो वही कर रहा है नेक्स्ट, the operations to be performed is determined by the control unit। so क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा राइट on that particular instruction, that is determined by the control unit। and finally the operand what is there in LOC, right, that is fetched into the from the memory into the processor। तो ये आपका मेन स्टेप्स हो गया। पहला स्टेप हो गया fetch the instruction from the memory into the processor। next operations to be performed, that is decoding basically आप बोलते हैं कहीं कहीं, पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा that will be determined by the control unit। and finally operand at the location LOC, right, is fetched from the memory to the processor। अब सारी चीजें आपका आ गया, and then whatever operation will be performed as per the control unit, that will be performed on that। once you have performed the operation, like suppose you have performed the addition operation, so you can see here this one, add r2, sorry, r4, r2 and r3। so there is three registers. We'll see again, there are different passes of operation, these machines, that we will see in the again coming slides। so when you are giving this command or this instruction, add r4, r2, r3, it means that you are going to add the last two, r2 plus r3, and where you are going to store that result in r4। and this r1, r2, r3, r4 is nothing but they are a general purpose registers। I will show you the diagram in the next slide, then it will be more clear to you to what are these r1, r2, r3, r4, right? And because there are n number of general purpose registers, right, so that we'll see। so r2 and r3 will be added and it will be stored in register r4। okay, so that is the next instruction। and finally what you are instructing, whatever contents is there in the register r4, you are going to store it into the location LOC again, and for that you are giving the command store r4 LOC। it means that you are giving the command means whatever contents is there in the register r4, you are going to store back in location r4। so this is what is the way how the instructions will be। moving on to the next slide, here I will show you the, actually see there is two diagram which is given here, don't get confused, some books this diagram is there, some book this diagram is there, okay, both is same, there is no difference। in place of processor memory interface, you are having separate lines for each, other things are same, if you see in the diagram। so there are basically these connections is coming, right, instead of your processor memory interface there is MAR is I don't know, sometimes it's creating problem, network issue, I don't know why, anyway। so MAR is nothing but memory address register, memory data registers, and other things already you know that, control unit whatever is there, arithmetic logic unit already you have seen in the previous diagrams, okay। and then MDR is nothing but memory data register, which there are n number of general purpose registers starting from R0 to Rn minus 1, okay, and that's why it's given here, you can say n general purpose registers, so that what it was there, no, R1, R2, R3, R4, whatever was there, we are using in store or add or subtract or then load,
So that is basically the data registers. There is memory address register, right? And under this there is two head. One is program counter, PC, right? PC is the short form of program counter, and IR is the sort of your instruction register. So we'll see the purpose of each one of these registers, right? ALU already we have discussed, control unit already we have discussed, as well as general purpose registers. So that we will see in the coming slides. So whatever you have seen in the previous slide, that is given here in the detail. Like for load and store instruction, उसमें हो क्या रहा है आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा ना. When we are telling load, it means we are transferring data from memory to the processor, and when we are telling store, it means we are going to transfer the data from your processor to the memory, right? If you're transferring data from memory to the processor, you have to specify the location of the memory, that is your address of the memory, when you are going to store it, along with the data you have to specify the address as well. So that is given there. So I'll just go through the text what is given. For load and store instructions, transfers between the memory and the processor are initiated by sending the address of the desired memory location to memory unit and starting the appropriate control signals. What is control signals? Whether it is a read operation or write operation. The data are then transferred to or from the memory. So you have to specify the control signals as well, like whether it is reading the data from the memory or storing the data into the memory. So that must be there. Again, there is details about the things what you have seen in the diagram and these things. You will see individual what is program counter, what is instruction register. So see what is there. The processor busy all the time. Hello, it's audible, no? Hers? Yes, sir, you're audible. Yes, sir. Because sometimes I don't know why it's going out of the network. Anyway. So whatever by there, that individual registers, you will see about their task. So first is your instruction register, and as the name suggests, instruction register is nothing but whatever instruction is executing at the moment in the processor, that is there in that instruction register. So that instruction, whatever is executing currently, is there in the instruction register. So we'll go through this. What is given there? The instruction register holds the instruction that is currently being executed, and its output is available to the control circuit, which generates the timing signals that control the various processing elements involved in executing the instruction. So the purpose of instruction register is to hold the current instruction which is being executed in the system. Next comes your program counter. As this name suggests, program counter is nothing but the register which points to the next instruction to be executed, right? So कौन सा next instruction आपका execute होने वाला है, that will be there in the program counter. Okay, so that is what is given there in the program counter. See what is there? Program counter is another specialized register. It contains the memory address of the next instruction to be fetched and executed. So next instruction कौन सा execute होगा वो वहां पर आपका store होता है in the program counter. अब कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द एक्सक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन द कंटेंट्स ऑफ द पीसी आर अपडेटेड, क्योंकि अलवेज जैसे आपका एक इंस्ट्रक्शन वहां से मूव करेगा आईआर में, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, नेक्स्ट क्या होगा आपका वहां पर नया आपका इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करेगा, कौन सा
ये आपका प्रोग्राम काउंटर। ओके, सो प्रोग्राम काउंटर क्या हो गया। अब कह रहा है कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन द कंटेंट्स ऑफ पीसी आर अपडेटेड टू कोरस्पॉन्ड टू द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। तो वो चेंज होते रहता है, जिस तरह से आईआर में भी चेंज होगा, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होता है दैट इज देयर इन द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। सिमिलरली द प्रोग्राम काउंटर क्या होगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या एग्जीक्यूट होगा, इट विल पॉइंट टू दैट instruction. So it is customary to say that the PC, that is program counter, points to the next instruction that is to be fetched from the memory. नेक्स्ट आपका आता है इन एडिशन टू IR एंड PC, जो मैंने आपको बताया जनरल पर्पस रजिस्टर स्टार्टिंग फ्रॉम R0 टू Rn-1। सो जनरल पर्पस रजिस्टर, इसमें क्या हम लोग स्टोर करते हैं, आपका फंक्शन हो गया, ऑपरेंड्स हो गया, ये सारा चीज आपका जो अलग अलग तरह के फंक्शंस हैं उसके ऑपरेंड्स को हम लोग स्टोर करते हैं। तो वही चीज यहाँ पर दिया हुआ है। द जनरल पर्पस रजिस्टर्स R0 थ्रू Rn-1 ऑफन कॉल्ड प्रोसेसर रजिस्टर्स। They serve a variety of functions including holding operands that have been loaded from the memory for processing. तो जो भी आपका स्टोर करना है, लोड करना है, सारा चीज कहाँ पर होता है आपका, सो दैट इज इन द जनरल पर्पस रजिस्टर और प्रोसेसर रजिस्टर। द प्रोसेसर मेमोरी इंटरफेस, अभी जो दूसरा वाला डायग्राम में था ना, प्रोसेसर मेमोरी इंटरफेस MAR MDR एंड दैट इज कंट्रोल यूनिट का जो डायग्राम था, वो दूसरे वाले में क्या था आपका, प्रोसेसर मेमोरी इंटरफेस। तो पर्पस वही है आपका, इंटरकनेक्शन फॉर MAR MDR एंड कंट्रोल यूनिट। तो वही कह रहा है आपका द प्रोसेसर मेमोरी इंटरफेस इज सर्किट विच मैनेजेस द ट्रांसफर ऑफ डेटा बिटवीन द मेन मेमोरी एंड द प्रोसेसर, क्योंकि वही आपका डेटा रजिस्टर के लिए भी होगा या एड्रेस रजिस्टर के लिए भी होगा। इफ a word is to be read from the memory, the interface sends the address of that word to the memory along with read control signal। क्योंकि आप जब लोड कर रहे हो तो क्या कर रहे हो आप, यू आर रीडिंग फ्रॉम द मेमोरी, राइट, यू आर लोडिंग इनटू द प्रोसेसर। द इंटरफेस वेट्स फॉर द वर्ड टू बी रिट्रीव्ड एंड देन ट्रांसफर इट टू द appropriate processor register। so जहां भी आपका प्रोसेसर रजिस्टर में जाना है, whether it is program counter, instruction register or your general purpose register, there it will be stored. If a word is to be written into the memory, अगर आप स्टोर करने जा रहे हो तो क्या कंट्रोल सिग्नल होगा आपका, राइट होगा, along with your address of the location where you are going to store it। तो ये कह रहा कि written into the memory, the interface transfers both the address and the word to the memory along with write control signal। तो लोड करने के लिए क्या होगा आपका, रीडिंग कंट्रोल सिग्नल होगा, एंड राइट करने के लिए स्टोर कंट्रोल, जो भी स्टोर करने के लिए राइट कंट्रोल सिग्नल होगा। ठीक है, तो इस तरह से ऐसा रहा। दूसरी का आपका उसको एक जस्ट शॉर्ट में ब्रीफ दिया हुआ, लेट अस नाउ कंसीडर सम टिपिकल ऑपरेशन ऑपरेटिंग स्टेप्स। तो क्या क्या होगा उसमें वही चीज दिया हुआ है। ए प्रोग्राम मस्ट बी इन मेमोरी इन ऑर्डर फॉर इट टू बी एक्सिक्यूटेड। तो सबको पता है कि अनटिल अनलेस इट विल बी देयर इन द प्रोसेसर इट विल नॉट बी एक्सिक्यूटेड। तो आपको उसको लोड होना है मेन मेमोरी में, एंड दैट इज योर रैम। इट इज ऑफन ट्रांसफर्ड देयर फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज थ्रू द इनपुट यूनिट। Execution of the program begins when the program counter, that is PC, is set to point to the first instruction of the program. The contents of PC are transferred to the memory along with a read control signal. When the addressed word has been fetched from the memory, it is loaded into the register, that is IR, instruction register. At this point, the instruction is ready to be interpreted and executed। तो ये सारा आपका समरी हो गया जो अभी आपने देखा उसका डिटेल्स। ठीक है, इन कंटिन्यूएशन विद दैट इंस्ट्रक्शन सच एज लोड, स्टोर एंड ऐड विच ऑलरेडी यू हैव सीन, परफॉर्म डेटा ट्रांसफर। क्योंकि आपका लोड में क्या करोगे, आप डेटा को ट्रांसफर करो मेमोरी से प्रोसेसर में, स्टोर में क्या करो,
प्रोसेसर से मेमोरी में स्टोर कर रहे हो, लोड मतलब सेव कर रहे हो। उसी तरह से ऐड के केस में क्या होगा आपका, आप ऐड कर रहे हो डेटा को, राइट, परफॉर्म डेटा ट्रांसफर एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन। If an operand that resides in the memory is required for an instruction, it is fetched by sending the address to the memory and initiating a read operation. अगर मान लिया आपका डेटा जो है मेमोरी में, तो वहां से रीड करके कहाँ लोड करेगा, प्रोसेसर में. The operands is transferred to a processor register. So naturally, already you have seen processor register or general purpose register, you can say. Both term is same. The arithmetic logic unit can perform the desired arithmetic operation and the result again कहाँ स्टोर होगा आपका, बैक होगा प्रोसेसर रजिस्टर में. एंड प्रोसेसर रजिस्टर से अगर मान लो स्टोर करना आपको मेमोरी में, देन इट विल बी स्टोर्ड देयर. इफ द रिजल्ट इज टू बी रिटन इनटू द मेमोरी, वही चीज दिया हुआ है, विद द स्टोर इंस्ट्रक्शन इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्रोसेसर रजिस्टर टू द मेमोरी along with the address of the location, कि कहाँ आपको स्टोर करना है डेटा के साथ साथ, where the result is to be stored when a write operation is initiated. At the same point, during the execution of each instruction, the contents of program counters are incremented. क्योंकि आपका काउंटर का मतलब ये क्या कर रहा है, वो काउंट कर रहा है, और you can say that it points to the next instruction to be executed. तो next कहाँ से आएगा, काउंटिंग करते ही आएगा ना. So that the program counter points to the next instruction to be executed, and thus the processor is ready to fetch a new instruction. तो दिस इज द बेसिक ऑपरेशन कंसेप्ट. इसको आगे हम लोग देखेंगे तो और ज़्यादा डिटेल्स में आएगा इसका. अभी तो जस्ट एक ब्रीफ पार्ट है, बेसिक्स इसलिए दिया हुआ, बेसिक ऑपरेशनल कंसेप्ट. आगे देखते हैं क्या है. इन एडिशन टू ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन मेमोरी एंड प्रोसेसर, ये तो होता ही है आपका. बीच बीच में क्या होता है कि इंटरप्ट भी जनरेट होता है. आप पढ़ोगे सब चीज़ें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में, क्योंकि अगर मान लो कोई भी एक प्रोसेस है, राइट, वो अर्जेंट है, तो क्या करेगा, जो काम चल रहा है, जो प्रोसेस कंटिन्यू है, उसको इंटरप्ट करेगा बाय सेंडिंग द इंटरप्ट सिग्नल, राइट, रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट टास्क, दैट इज preempting that work which is going on or the process which is executing currently. So immediately क्या करेगा, वो जो भी प्रोसेस हो रहा होगा at that moment, it will be stored into the memory because again it will start from that point. So उस केस में वो क्या करेगा, उसको मेमोरी में स्टोर करेगा, and the process which is important, which has been preempted, will be taking the processor. तो वही सब आपका डिटेल्स दिया हुआ है. लेट मी गो थ्रू द टेक्स्ट, देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू. इन एडिशन टू ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन मेमोरी एंड द प्रोसेसर, जो अभी आपने देखा, द कंप्यूटर एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस एंड सेंड्स डेटा टू आउटपुट डिवाइसेस, राइट, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. Thus some machine instructions are provided for the purpose of handling input output transfer. ऑलरेडी आईओ जहां भी रहेगा आपको समझ जाओ कि इनपुट आउटपुट ट्रांसफर की बात कर रहा है. दोनों, आइदर इनपुट भी हो सकता है और आउटपुट भी हो सकता है. अब कह रहे हैं कि नॉर्मल एक्सक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम में बी प्रिम्प्टेड. प्रिम्प्टेड मतलब क्या हो गया कि वॉट एवर इज गोइंग ऑन एट दैट मोमेंट हैज टू बी स्टॉप्ड एंड द नेक्स्ट प्रोसेस विच हैज हायर प्रायोरिटी विल बी प्रोवाइडेड दैट प्रोसेसर. तो ये कह रहा है कि प्रोग्राम में बी प्रिम्प्टेड इफ सम डिवाइस रिक्वायर्स अर्जेंट सर्विस. अब इसका एग्जाम्पल एक दिया हुआ है, देख सकते हो. A monitoring device in a computer controlled industrial process may detect a dangerous condition. मान लो कोई सिचुएशन है, अगर उसको नहीं कंट्रोल किया गया तो इट में हार्म टू द प्लांट एंड मशीनरी. तो उस केस में क्या करेगा, उसको इंटरप्ट भेजेगा. इन ऑर्डर टू रिस्पॉन्ड इमीडिएटली, एक्सक्यूशन ऑफ द करंट प्रोग्राम मस्ट बी सस्पेंडेड. जो चल रहा है उसको स्टॉप करेगा, सस्पेंड करेगा, और जो भी उसका डिटेल्स है उसको मेमोरी में स्टोर कर देगा. टू कॉज दिस, द डिवाइस रेजेज एन इंटरप्ट सिग्नल एंड विच इज अ रिक्वेस्ट फॉर सर्विस बाय द प्रोसेसर. राइट. अब क्या करेगा, अब इसके बाद क्या करेगा, प्रोसेसर क्या करेगा, प्रोसेसर
The processor provides the requested service by executing a program called an interrupt service routine. Means क्या उसको रिक्वायरमेंट है उस तरह वो उसको सर्विस करेगा थ्रू इंटरप्ट सर्विस रूटीन. बिकॉज सच डाइवर्सन्स में ऑल्टर द इंटरनल स्टेट. मतलब मान लो अभी एक प्रोग्राम चल रहा था, उसमें प्रोग्राम काउंटर में कुछ था, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में कुछ था, डेटा रजिस्टर में कुछ था. दैट ऑल दैट डिटेल्स विल बी स्टोर्ड इन द मेमोरी बैक. व्हाई? बिकॉज एज सुन एज द इंटरप्ट हैंडलर completes the task, again that program will start executing, right? And the data whatever saved from the memory will be fetched, and from there itself it will start. तो वही दिया हुआ है कि because such diversions may alter the internal state of the processor, its state must be saved in the memory. Normally, the information that is saved includes the contents of the PC, that is program counter, the contents of the general purpose registers, and some control information. तो वही चीज आपका है, कंटेंट्स जो भी पीसी में था वो स्टोर किया, जनरल पर्पस रजिस्टर का था उसको एक स्टोर किया, एंड कंट्रोल इंफॉर्मेशन भी स्टोर किया. लेकिन जैसे वो कंप्लीट हो जाएगा, इंटरप्ट हैंडलर कंप्लीट कर लेगा टास्क, सो अगेन इट विल बी लोडेड बैक इनटू द program counter, general purpose register, and control information. When the interrupt service routine is completed, the state of the processor is restored. मतलब जो आपका previous state में था उस state में आ जाएगा from the memory, so that the interrupted program may continue. तो जो program execute हो रहा था, जिसको interrupt hand किया गया था, that will again continue from the same point. तो ये आपका सारा बेसिक ऑपरेशंस जो है कंप्लीट हो गया यहीं से. ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है फ्लोटिंग एंड फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन. हम लोग किस तरह से डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, वेदर इट इज फिक्स्ड पॉइंट. फिक्स्ड पॉइंट का मतलब क्या हो गया, कोई आपका इंटीजर नंबर है, देयर इज नो डेसिमल पॉइंट, एंड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन वेयर एवर देयर इज अ डेसिमल पॉइंट. फिक्स्ड पॉइंट मतलब इंटीजर नॉर्मली भी इंटीजर का मतलब हुआ कि देयर इज नो डेसिमल पॉइंट. लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट की बात करते हैं तो देयर इज डेसिमल पॉइंट्स एज वेल. सो अब आपका आता है पहला पार्ट इंटीजर्स. एंड व्हाट इज इंटीजर्स? क्या होता है जी इंटीजर? सब लोग आप एक पढ़े हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी, डिक्लेयर करते थे ना. यस सर. हेलो, हाँ, तो वही इंटीजर है आपका. अब इंटीजर में क्या होता है बेसिकली, मान लो आपका 2 बिट का है या 3 बिट का है या 4 बिट का है या 8 बिट का, डिपेंड्स, राइट, व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम यू आर यूजिंग. सो आपका कितने बिट का वो ये है इंटीजर है, राइट. और स्टार्ट कहाँ से होगा आपका? अच्छा, ये एमएसबी और एलएसबी क्या होता है, किसी को पता है? एमएसबी एंड एलएसबी, हाँ, क्या होता है? सिग्निफिकेंट बिट एंड लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट. हाँ, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन होता है? सर लेफ्ट मोस्ट. Yes, leftmost bit is the most significant bit and rightmost is the least significant bit. और सबको पता है कि नहीं ये कन्वर्सन वगैरह जो है आपका, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, सबको है ना. डेसिमल मतलब इधर भी डेसिमल से मान लिया हमको तीनों फॉर्मेट में करना है, चाहे वो ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में या बाइनरी में, तो सबको पता है ना, क्योंकि वो सब आपको आएगा. वंस कम्प्लीमेंट, टूज कम्प्लीमेंट, वो सारा चीज आपको ये करेंगे, हम लोग यूज करेंगे. आज नहीं, मैं अभी स्लाइड से ही करते हैं, कल आपको एक एग्जाम्पल वगैरह दे करके इसमें नेट पैड में मैं कर दूंगा, आपको दिखा दूंगा उसको किस तरह से करते हैं. तो आज इसी को हम लोग कंसीडर करते हैं. ठीक है, अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि just I'll go through text by text and whatever doubt you have, just Good morning, sir. हाँ Sir, may I ask something? हाँ बोलो.
Sir, I want to know if इस semester midterm होगा या that quiz based system होगा. टिल नाउ अगर ऑनलाइन चल रहा है क्लासेस तो क्विज बेस ही होगा. ठीक है. Okay, so then हाँ. we have to prepare for quiz or midterm because if quiz ले लिया 2-3 मॉड्यूल का, then उसके बाद midterm भी होगा अगर if in case everything or all the situation goes fine. That is very difficult to answer right now. Understand? Because we are not knowing the situation. If situation improves, मान लो आपका कोरोना कम होता है, in that scenario, it's not in our decision. Management is there to look after all this activity. हाँ, रही बात मिड टर्म की, so I don't think even if it is offline, मान लो आपका 2 क्विज हो चुका है या 3 क्विज हो चुका है, I don't think there will be mid term for that because already we have completed that mid term portion. Understand? So I hope there will be quiz. Offline quiz will be there that you have to appear for. Understand? But again, it is too early to say for offline classes. बिकॉज अभी जो सिनारियो है आपका अप्रैल तक सेशन है. आई होप अभी तो चांसेस नहीं है सुधरने का. जनवरी फेब में भी हमको नहीं लगता है. फेब एंड तक कुछ होगा अगर सपोज करो पिक आउट होता है तो. सो मार्च आई डोंट थिंक इट विल बी देयर. ठीक है. थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो. तो वेट फॉर द next notice from main campus, then we can see what is going on. Okay, sir. So let us go for that. All these are the simple things you have done, all these things, but yes, since I have to go through, I'll do it. So fixed point में integer की बात करते हैं पहले. The most natural way to represent a number in a computer system is by a string of bits. String of bits means क्या होता है? String मतलब क्या हो गया? Groups. राइट. स्ट्रिंग अब हम लोग कैरेक्टर को बोलते हैं, बट यहाँ ग्रुप की बात कर रहे हैं. बिट्स मीन्स बाइनरी डिजिट्स कॉल्ड अ बाइनरी नंबर. अब मान लिया आपका एन बिट का नंबर है, वही कर रहा है. कंसीडर एन एन बिट वेक्टर. एन बिट का मतलब हो गया कि आपके जो डिजिट है, नंबर है, उसमें कितने ग्रुप हैं? एन बिट्स हैं. एंड दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम B0 B1 डॉट 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 Bn-1. राइट. सो टोटल कितने हो गए आपका यहाँ वेक्टर बी में? टोटल एन नंबर ऑफ बिट्स हो गए यहाँ पर. राइट. अब कह रहा है कि वेयर बी आई इज इक्वल टू 0 और 1 फॉर 0 इज लेस देन इक्वल टू आई इज लेस देन इक्वल टू n-1. तो ये आपका एक रेंज बता दिया कि 0 से n-1 तक होगा. नेचुरली जब 0 स्टार्ट होगा तो n-1 होगा, अगर 1 होगा तो n तक होगा. सिंपल सी बात है. एंड दिस वेक्टर कैन रिप्रेजेंट एन अनसाइंड इंटीजर. अच्छा, अनसाइंड और साइंड में पता है ना क्या होता है? अनसाइंड का मतलब क्या होता है? द नंबर. यस सर, पता है. हाँ, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, वो आपको नेगेटिव कभी नहीं होगा. अनसाइंड. जहां भी साइन की बात आती है दैट विल बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, बोथ. सो अनसाइंड इंटीजर वैल्यू भी इन द रेंज. अब उसका रेंज क्या होगा? 0 to 2 to the power n-1. अगर मान लिया आपका डिजिट है, कोई नंबर है, वो 4 बिट का है. राइट. 4 बिट का है तो उसका रेंज कितना हो जाएगा? 0 to 15. ओके. सो अगर आप देखते हो बाइनरी कन्वर्सन आपको पता है ऑलरेडी, तो किस तरह से हम लोग करते हैं बाइनरी टू डेसिमल में. वही चीज़ दिया हुआ है यहाँ पर. 2 to the power 0 B0 जो भी वैल्यू होगा इसका, B1 का होगा 2 to the power 1 एंड सो ऑन. लास्ट जो आता है इस तरह से आता है. ऑलरेडी आपने कन्वर्सन किया है तो आपको पता होगा. अब आते हैं नेक्स्ट जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहाँ पर. ये अगेन आपको ये सारा चीज़ ही पता है, मुझे मालूम है. वंस कम्प्लीमेंट टूज कम्प्लीमेंट. अब कह रहा है कि वी नीड टू रिप्रेजेंट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इन द सिस्टम. ये तो आपको पता है. इन दैट सिनेरियो 3 सिस्टम्स आर यूज्ड. राइट. एंड व्हाट इज दैट सिस्टम? एक है आपका साइन एंड मैग्नीट्यूड. साइन एंड मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया साइन बिट. ऑलवेज आपका एक बिट जो होगा, अगर मान लो आपका 4 बिट का नंबर है बाइनरी नंबर,
So उसमें जो most significant bit, or you can say leftmost bit, will be your sign bit, right, which will be representing the sign, whether it is positive or negative. If it is 0, it means positive. If it is 1, it means your negative number. So first bit will be your sign bit, and remaining bit positions will be your magnitude of the number. तो वही कह रहा है कि पहला जो होगा आपका साइन एंड मैग्नीट्यूड होगा, दूसरा होगा वंस कंप्लीमेंट, ऑल ऑफ यू नो, एंड सेकंड इज योर टूज कंप्लीमेंट. अब कह रहा है कि इन ऑल थ्री सिस्टम अगर पॉजिटिव नंबर है तो कोई चेंज नहीं होता है, सब में सेम रहेगा, चाहे वो साइन एंड मैग्नीट्यूड हो, वंस कंप्लीमेंट हो या टूज कंप्लीमेंट हो. देयर इज नो चेंज एट ऑल इन केस ऑफ पॉजिटिव नंबर. लेकिन अगर वो निगेटिव नंबर होगा, in that scenario it will be different in all the systems. So that is what is given there. In all three systems the leftmost bit is 0 for positive number and 1 is for negative number. अब कह रहा है कि पॉजिटिव वैल्यू हैव आइडेंटिकल रिप्रेजेंटेशन इन ऑल सिस्टम. तो सारे सिस्टम में आपका पॉजिटिव नंबर जो है होगा उसका चेंज नहीं होता है, दैट इज सेम. ठीक है, बट नेगेटिव वैल्यू क्या होगा, डिफरेंट होगा रिप्रेजेंटेशन में इन तीनों फॉर्मेट में आपका. इन द साइन एंड मैग्नीट्यूड सिस्टम नेगेटिव वैल्यूज आर रिप्रेजेंटेड बाय चेंजिंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, दैट इज B3. अभी नेक्स्ट आपका डायग्राम दिखाएंगे उसमें आएगा, फ्रॉम 0 to 1. ठीक है, अगर 0 है तो पॉजिटिव नंबर है, 1 है तो नेगेटिव नंबर है. In the B vector of the corresponding positive value. So let us see that one, and that will be the last slide today. Next class will continue. So this one is there. यही है आपका डायग्राम. तो अगर मान लिया आपका n का वैल्यू 4 है तो क्या हो जाएगा, B0, B1, B2, B3, मतलब टोटल आपके 4 बिट नंबर हो गया. एंड जनरली आपका 4 बिट में इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वही दिया हुआ है आपका. अब देखो इसमें साइन एंड मैग्नीट्यूड में, वंस कंप्लीमेंट में एंड टूज कंप्लीमेंट में पॉजिटिव नंबर जहां तक 0 0 है ये सारे पॉजिटिव है, क्योंकि हमने क्या बोला, MSB या लेफ्ट मोस्ट बिट इज 0, इट मीन्स द नंबर इज पॉजिटिव. एंड इन सारे फॉर्मेट्स में आप देख लो, चाहे वो साइन एंड मैग्नीट्यूड है, वंस कंप्लीमेंट है या टूज कंप्लीमेंट है, द नंबर इज सेम. Even 0 0 0 wherever is there, all have positive 0 0 0. Understand? So wherever the number is positive, all three formats will have the similar representation. But अगर उसका आपका नेगेटिव नंबर होगा, इन दैट सिनेरियो थिंग्स विल बी डिफरेंट. आप कहाँ से चेंज हो रहा है, अब देखो यहाँ पर 1 जैसे ही आया 1 आपका लेफ्ट मोस्ट बिट, इट मीन्स द नंबर इज नेगेटिव. और आप देख सकते हो साइन एंड मैग्नीट्यूड में क्या आ गया, -0, 0 को रिप्रेजेंट करता है. सो दैट इज -0. इन वंस कंप्लीमेंट अगर इसको चेंज करोगे, पता है ना आपको वंस कंप्लीमेंट कैसे करते हैं, 0 को 1, 1 को 0 करोगे तो क्या आएगा आपका, 111 आ जाएगा यहाँ पर. यस सर. और 111 क्या होता है, 7 का होता है पॉजिटिव में, सिंस 1 इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिव नंबर, सो योर 7 विल बी नेगेटिव हियर इन वंस कंप्लीमेंट. एंड टूज कंप्लीमेंट क्या होता है, 1 मोर होता है आपका इन केस ऑफ दैट, सो इट इज -8. तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा कि वंस कंप्लीमेंट में अगर 1 ऐड करते हो तो आपको टूज कंप्लीमेंट मिल जाता है, इसलिए यस प्लीज. हेलो, हमने बोला कोई कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है. ओके, सो ये आपका हो गया. वंस कंप्लीमेंट में आपका 7 हो जाएगा माइनस, एंड टूज कंप्लीमेंट में -8 हो जाएगा, एंड सो ऑन. अब ये सारे जितने भी 1 1 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है सारे नेगेटिव नंबर हैं, और ये इस तरह से बढ़ते जाएगा. साइन एंड मैग्नीट्यूड में आप देखते जाइए, 0 -1 -2 -3 -4 टिल -7 तक जाएगा. अगर 4 बिट का है तो उससे ज़्यादा नहीं जा सकता है. एंड वंस कंप्लीमेंट में यहाँ से -7 से जाकर के -0 हो जाएगा, और टूज कंप्लीमेंट में -1 तक जाएगा. सो यही है आपका बेसिकली रिप्रेजेंट, वही है बाइनरी साइन इंटीजर रिप्रेजेंटेशन. किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं साइन एंड मैग्नीट्यूड में, वंस कंप्लीमेंट में एंड टूज कंप्लीमेंट में. ठीक है, जस्ट आई विल फिनिश दिस वन फास्ट. फॉर n bit numbers
This operation is equivalent to subtracting the number from 2 to the power n minus 1. In case of the 4-bit numbers, the figure what you have seen, we subtract सेम वही कहानी कितना है, वही कितना बिट आपका 2 टू द पावर 4 माइनस 1. सो टोटल कितने हो जाएंगे 15, जो अभी आपको मैं बता रहा था. एंड 15 का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है आपका 1111 इन बाइनरी. तो वही चीज आपका यहाँ तक 15 हो गया आप कंप्लीट. जितने बिट होंगे, अगर आपका 3 बिट का होगा तो 7 रिप्रेजेंटेशन आएगा, 0 to 8 7 आएगा, मतलब टोटल 8 हो जाएंगे. तो वही चीज आपका यहाँ पर दिया हुआ है. Forming an 2's complement of an n-bit number is done by subtracting the number from 2 to the power n. Hence, the 2's complement of the number is obtained by adding 1. 1's complement में 1 ऐड करेंगे तो हमारा 2's complement मिलता है. 1 to the 1's complement of that number. तो मैं आपको पहले ही बता दिया. अब ऐड करते हैं तो किस तरह से होता है, 0 + 0 पता है सबको, 0 1 1 0, राइट. बट 1 1 वर्ड करते हैं तो 2 होता है, और 2 का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है बाइनरी में 1 0. सो आपका 0 यहाँ हो जाएगा, कैरी आउट लेफ्ट मोस्ट बिट हो जाएगा. सो विल कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक, और यू कैन से सेम टॉपिक इंटीजर्स रिप्रेजेंटेशन in the next class. Just wait, let me download the attendance. After that you can do. So anybody have any query? No, sir. ओके. थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा. अभी इसके बाद जो आएगा, आज में तो प्रैक्टिस वाला पार्ट नहीं आया, कल मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आपसे कुछ. सो बिकॉज दैट विल बी द इम्पोर्टेंट पार्ट. आज तो सिंपली आपका वही रह गया थियोरेटिकल पार्ट टाइप. सो इसमें आएगा आपका अर्थमेटिक, जो एडिशन सब्सट्रैक्शन ओवरफ्लो, ठीक है, वो सारा चीज़ आपको बताएंगे. साइन एक्सटेंशन, तो नेक्स्ट क्लास में जब डिस्कस करेंगे. देन आपका उसके बाद वाले क्लास में होपफुली विल डिस्कस फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन. सिस्टम ही हैंग हो गया. रियली हॉरिबल. एनीवे, ऐसे मैंने क्लिक कर दिया है. इट विल टेक टाइम. आप लोग लीव कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. आपका दूसरा क्लास भी होगा ना, यू कैन लीव द मीटिंग, नो प्रॉब्लम. मेरा हैंग कर गया. Thank you, sir.